Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to macroeconomics course lecture number 7 आज हम पढ़ेंगे। पहले की तरह चंद मिनट के लिए विल रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर कि हमने क्या सीखा, व्हाट वर द कंटेंट्स। जैसा कि आपको पता है वी स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक फॉर डिस्कशन जिसका नाम था, द टाइटल ऑफ द टॉपिक वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पैरामीटर टू लर्न अबाउट डिफरेंट इकोनॉमीज़। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो क्वेश्चन सवाल ज़हन में ये आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए वी लुक एट द नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जो कि हमें बताती है कि हाउ मच इज़ द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और अक्रॉस द कंट्री जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उस जीडीपी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क में आप ये कहते हैं कि जीडीपी में, नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा होगा। तो किसी भी मुल्क की उसकी इकानमी का जायज़ा लेने के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना पड़ता है कि क्या उस मुल्क में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। पैरामीटर्स जो हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए हमने ये कहा कि जीडीपी या नेशनल इनकम एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें बताता है। अगर जीडीपी बढ़ रही होती तो हम कहते हैं कि देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और ओवर आप देखें, अगर इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर द ईयर्स, तो बहुत सारे ममालिक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है ओवर द टाइम पीरियड इजाफा हुआ है। अब वो ये चीज़ बताती है कि देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑन दोज कंट्रीज। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे होता है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर होता है, सोसाइटी में लोग की ज़िंदगी के हालात बेहतर होते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए हमने देखना ये कि हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स that can bring or that can determine economic growth in the country or in the economy। कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं हम कि उस मुल्क में ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। उन फैक्टर्स का हम जायज़ा लेंगे। अब जब ग्रोथ की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हमें ग्रोथ में वी हैव टू लुक एट द बेसिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जब ग्रोथ का जिक्र आता है तो उस मॉडल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड व्हाट वाज द मॉडल बेसिकली, क्या मॉडल था? सोलो हैज़ गिवन एज ग्रोथ मॉडल, सो दैट इज़ द बेस फॉर ऑल कमिंग ग्रोथ मॉडल्स इन द लिटरेचर। तो उसके बाद जितने भी मॉडल्स आए ग्रोथ के, उनको उन्होंने बेस बनाया एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन ग्रोथ मॉडल्स। तो ग्रोथ को समझने के लिए हमने ये कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि सोलो का जो ग्रोथ मॉडल है उसको समझा जाए, उसको देखा जाए कि किस तरह से सोलो ने कहा कि आउटपुट किस तरह से डिटरमाइंड होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमने ये देखा पिछले लेक्चर में, सोलो ने ये कहा कि नॉर्मली देयर आर 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन और इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री और इन द इकोनॉमी। कौन कौन से? सेविंग रेट is one of the factor that can affect or determine the economic growth. Second is the population growth rate। population growth जो है national income को या GDP को affect कर सकता है। और the third factor जो उसने कहा is the technology, change in technology in the country, that can also affect the economic growth। तो 3 factors हैं, 3 अवामिल हैं जिनके बारे में सोलो ने कहा कि ये जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
तो वी स्टार्टेड टू डिस्कस द सोलो मॉडल इन द प्रीवियस लेक्चर, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने ये देखा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सोलो मॉडल शोज दैट इन द लॉन्ग रन ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग depends on positively on saving rate. This is what we have seen yesterday. And secondly, it negatively depends on population growth. So we'll continue in today's lecture the previous Solow model. उसी को आगे हम बढ़ाएंगे और उसी पे देखेंगे कि how different factors can affect income or GDP in the country, and then in turn which affects the economic growth of the economy. तो उसी को सोलो मॉडल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में उस पर बात करेंगे। We'll talk about specifically two things पे आज हम बात करेंगे। We'll talk about the steady state. So what we mean by steady state in Solow model, and second we'll talk about the golden rule of capital, उसकी हम बात करें। These are the two things जो कि आज के लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। We'll start from the previous equation of motion for capital जो हमने last time determine की थी। हमने ये कहा था कि change in capital delta K capital per worker is equal to investment minus depreciation, right? So we said that the Solow model we determined the equation that change in capital is equal to investment minus depreciation. So this is a central equation. This is a very important equation in Solow model. It basically determines the behavior of the capital over time period in the economy. Okay, what is going to happen with the capital if the economy grows over time? अगर capital में इजाफा होता है तो how it affects the national income of the economy. if capital में कमी वाक़या होती है over the time period, किस तरह से that affect the national income of the country or the GDP of the country. तो this equation is a very important or central equation in Solow model. इसी को लेके आगे हम जितने भी parameters जैसे population growth को देखेंगे, technology की देखेंगे, तो we'll use this equation and include the effect of population as well as technological progress in the equation and see what happens to change in capital stock. Because you know capital stock as we know that there are factors of production, capital and labor जो कि यूज़ किए जाते हैं to produce output in the economy. हमने ये assume किया था for the time हमने assume किया था लेबर और टेक्नोलॉजी फिक्स हैं। बाद में हम उसमें जब पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें चेंज ला के इसमें कैपिटल में चेंज देखें। अभी हमने ये कहा कि only if there is change in capital, how that change in capital can affect the growth rate of the economy or income of the economy. तो ये एक important equation है Solow model में, इसी को लेके आगे हम चलेंगे और it determines the behavior of capital over the time period in the economy, and then which in turn determines the behavior of all other endogenous variables because they all depend on capital per worker. For example, जब we'll talk about income per worker की हमने बात की, that depends on capital per worker. And then consumption function जब हमने determine किया, again that depends on capital per worker. So capital is very important per worker is very important in Solow model, and this equation is very important because change in capital stock determines the behavior or the direction of the other endogenous variable in the economy, like जैसा कि हमने बात की income की, income per worker जो है depends on the capital per worker. इसी तरह consumption जो है, consumption also depends on capital per worker. तो whenever there is a change in capital per worker in the economy, जब भी कभी capital per worker में तब्दीली आती है economy में तो उससे consumption effect होती है, उससे income per worker effect होती है. तो this equation plays a very central and important role in Solow growth model. Now we'll talk about the first concept, the thing that we want to discuss in this class is the steady state. What we mean by steady state? If we know the equation of Solow is equal to delta K is equal to SFK, which is the investment minus depreciation. Now if
investment is just enough to cover depreciation, so then we can say that investment is equal to depreciation, right? The SFK is equal to delta K. So then capital per worker will remain constant, or you can say that the change in capital per worker is equal to 0. So this constant value denoted by K star is called the steady state of capital. So in what we have seen in this slide, हमने ये कहा कि if we say that इन्वेस्टमेंट, अगर इतनी ही इन्वेस्टमेंट है कि जितना कैपिटल डेप्रिशिएट हो रहा है ओवर द टाइम पीरियड, उतनी भी उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि SFK विच इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा K विच इज दी डेप्रिसिएशन. अगर ये दोनों बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज 0, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल स्टॉक and it remains fixed, it remains constant, and that fixed or constant capital stock is denoted by K star, and this is known as the steady state of capital in the economy. Now we'll try to explain this steady state with the help of a diagram also. If you look in the diagram, we have two curves. On y-axis we are measuring investment and depreciation. On x-axis we are measuring capital per worker. SFK is the curve of investment and delta K is the curve of capital. Both of these two curves are intersecting at a point, at some point, and if you give some name to this point, suppose we call this, if we call this point A, so they are intersecting at some point which is called point A. Now this point where investment is equal to saving, this gave us the steady state or steady state level of capital in the economy, which is denoted by K star. Both investment and depreciation is equal, and in this case delta K is equal to 0. Now how we call this is a steady state? Now suppose if capital is below than this level, if suppose we have K1 which is lower than K star, so what is happening here? अगर हम K1 पे देखें कि क्या सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो what is happening here? यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट जो है इज ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन. सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन, इट मींस इन्वेस्टमेंट मुल्क में ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन उससे कम है, तो दैट हेल्प्स टू कैपिटल ग्रो इन द इकोनॉमी. जब कैपिटल ग्रो करता है, कैपिटल बढ़ता है, तो हम मूव करते हैं टूवर्ड्स स्टेडी स्टेट्स. नाउ सपोज वी हैव अदर कैपिटल विच इज K2. Now again at this K2, what is happening in the economy? Investment again is greater than depreciation. इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से, और चेंज इन कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है. जब इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से, कैपिटल ग्रो करता है. लेकिन अगर देखें जो ही हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स K स्टार, स्टेडी स्टेट कैपिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका जो चेंज इन कैपिटल है वो कम होता जाता है. And it as we keeps moving, if we have a K3, again change in capital is less as compared to K2, and we are moving toward K star. So in nutshell, in summary, we can say that as long as K is less than K star, अगर हम कोई ऐसा कैपिटल लेवल लेते हैं जो कि स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल K star से कम है, लेस है, तो the investment is will exceed than depreciation, and K will continue to grow until it reaches at K star. So that's why we call K star is the steady state or the steady state level of capital in the economy. इसी तरह हम अगर if you take any K greater than K star, तो क्या होगा वहाँ पे? If we have any level of capital which is greater than K star,
तो what is happening there? At that point depreciation is greater than investment. जब depreciation ज़्यादा होगी investment से तो क्या होगा, कैपिटल जो है इकोनॉमी में क्या श्रिंक करेगा, कैपिटल में कमी वाकई आएगी। जब इसी तरह जब एनी पॉइंट अगर जब आप नीचे आते जाते हैं, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स के स्टार स्टेडी कैपिटल की तरफ आते हैं, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से और कैपिटल में कमी वाकई होती जाती है। एंड इफ़ यू स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स के स्टार, आप कंटिन्यू करते हैं के स्टार की तरफ आते हैं, तो यू विल कम टू द पॉइंट, एट दैट पॉइंट इन्वेस्टमेंट विल बी equal to depreciation, or will the economy will reach at K star level, which is the steady state per capita, steady state level of capital in the economy. At this point investment is equal to depreciation and change in capital is equal to 0. So that is why this is the reason we call steady state level of capital in the economy. We'll try to explain this with the help of a numerical example. As we know that we have a production function, y is a function of capital and labor. If we have this production function like this, KL under root, we can write it k is y is equal to k 1 over 2 L 1 over 2. As we know that the value of under root is 1 over 2. So production function can be written as y is equal to k 1 over 2 L 1 over 2. Now in order to derive the per capita income or per worker income, we need to divide this equation by L. So y over L is equal to k 1 over 2 L 1 over 2 over L. So that is equal to k over L की power 1 over 2. So income per worker is the function of capital per worker, which is k 1 over 2. K small जो lower case में हैं ये letters y and k. So y is equal to y over L, k is equal to k over L, and that is the income per worker as well as and capital per worker respectively. So we got this equation, y is equal to y is equal to f k and k is equal to k की power 1 by 2. Now we assume that, if we assume that, this is the question, अभी आप तक question है, अब हमारा मकसद क्या है कि आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है y is equal to k 1 by 2 L 1 by 2 and you have given some other things, and आपने find करना है कि कहाँ पे जो है, where from at which stage we will get the steady state of capital, कहाँ पे आएगा, तो उसको हम एक एग्जांपल के जरिए करना चाह रहे हैं। पहले हमने डायग्राम से उसको साबित किया, अब हम उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए प्रूफ करना चाह रहे हैं कि how economy can come to a steady state level of capital. Assume that saving rate is equal to 0.3, depreciation is 0.1, initial value of capital is 4, and production function is equal to y is equal to k की power 1 by 2. So we have asked to find out, now 30% is saved, 70% point saving. When we say that s is equal to 0.3, it means 30% of the income is saved, 70% of the income is consumed, initial level of k is 4, and depreciation is given to us 1.14. Now how we come to this table, if you look in this table, अब बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने फाइंड करना है। हमारे पास assumption क्या है कि we have given k की power 1 by 2 or k under root, s is equal to 0.3, delta which is depreciation is given to us which is 0.1, initial value of capital per work is given which is 4. Now we have different years starting from 1 to 100. K is the next column, Y consumption, investment, change in capital, and then the depreciation is the next. As we know that at the starting point is that in the first year capital is given to us which is 4, right? Income जो है is given to us is 2 because 70% of the income. Now how we can find that, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास which is very important, इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो मोशन इक्वेशन है सोलो मॉडल की, डेल्टा के इज इक्वल टू एस एफ के
minus delta K, which is depreciation. To solve the steady state, we have, as we know, that delta K is equal to 0, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है कि स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन है कि यहाँ पे ये 0 होती है और एस एफ के इज इक्वल टू डेल्टा के। वी हैव गिवन now how we first, when we have 4.2 capital, so what would be the next capital in the next year? So as we know that k is given to us, k, what is k? K is 4। जब k की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो 4 की पावर 1/2, so y will be 2 in the first year। So how we can get the value of y? In the production function हमारा क्या है? y is equal to under root k, और under root k में आप वैल्यू रखेंगे y is given to us which is equal to under root k, or we have given initial k which is 4. If just substitute that value k under root, so k under root 4 under root means y is equal to 2. Now 70% of the output is saved, which is consumed. Only 20% is saved. What is the 20% of this 2 that is saved? 30% of the 2 which is the output is saved, 70% is consumed. Now 30% of this 2 is 0.2. Now 0.2 जो आपका सेव्ड है विच इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट, एंड जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग होती है, वो इन्वेस्ट की जाती है, और इन्वेस्टमेंट जो है बिकम्स द पार्ट ऑफ कैपिटल इन नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर कैपिटल क्या बनेगा? 4.2। नो 4.2 का आपने इसको, दिस इज द कैपिटल, और ये अगर आप वहां पे k की जगह रख देंगे तो दैट विल गिव यू दी इनकम ऑफ द सेकंड ईयर। तो फर्स्ट हम पहले साल को लेते हैं, इस टेबल को देखें। पहले साल में हमारे पास कैपिटल गिवन है 4, और आउटपुट कैसे आई? हमने 4 जो वैल्यू कैपिटल की गिवन है वो प्रोडक्शन फंक्शन में रख दें, y इज इक्वल टू के अंडर रूट, तो वहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब हम ये कहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि 30% सेव है, ये हमें एजम्पशन गिवन है, और 70% कंज्यूम्ड है। अब 2 का 70% बनता है 1.4, और 2 का 30% बनता है वो 6। तो 6 जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जो कि सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अब कंजम्पशन 1.4 है, इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास? 6 है, तो चेंज इन कैपिटल कितना आएगा? हाउ मच इज द चेंज इन कैपिटल? 0.4 is the change in depreciation is 4. How much is the change in depreciation? Depreciation कितनी होगी? is 2. Delta K is 2, because 6 जो है आपकी, 6 is the depreciation. If you subtract 6 from change in capital, that is, sorry, the change in this is the depreciation, this will give us the change in capital. Change in capital, ये जो आपका सेकंड लास्ट कॉलम है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। 0.4 इज द डेप्रिसिएशन। जो शुरू में आप देखें कि यहाँ आपको डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन है 1 है, तो यहाँ पे आपने जो डेप्रिसिएशन निकाली दैट इज 0.4। अब 6 इज द इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज 4, change in capital stock will be 0.26 minus 4 will give us 0.2. तो now will come to the second year। इसी तरह सेकंड ईयर का आपका कैपिटल क्या बनेगा? जो 0.2 चेंज इन कैपिटल आया, दिस विल बी एडेड इनटू द कैपिटल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो कि 4 था। अब जो नए साल का कैपिटल है वो 4.2। अब वही प्रोसेस आप रिपीट कर देंगे। 4.2 का 4.2 को अगर आप रखें प्रोडक्शन फंक्शन में, y इज इक्वल टू 4.2 अंडर रूट, दिस विल गिव अस 2.04
9। अब 2.4749 का 70% जो है 30% कंजम्पशन है विच इज 1.43 एंड 30% जो है is the investment or the saving which is 0.616 और जो change in depreciation क्या है, depreciation कितनी आ जाएगी, depreciation will be equal to is 0.420. If you subtract 0.420 which is the depreciation from investment, this will give us change in capital that which is 1.195. अब ये जो 0.195 है सेकेंड साल का, दूसरे साल का क्या चेंज इन कैपिटल, इसको आप उसमें जमा कर लें 4.29 में, तो दिस विल गिव अस द कैपिटल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है कि कैपिटल इज़ द टोटल स्टॉक अवेलेबल ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट जो उस कैपिटल में से इन्वेस्टमेंट की जाती है और अगले साल में वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। सो जो चेंज इन कैपिटल जितनी भी आती जाती इकोनॉमी दैट बिकम पार्ट ऑफ द चेंज इन कैपिटल आती है वो दैट बिकम द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर कैपिटल अवेलेबल इन द इकोनॉमी। सो 0.195 को इसमें जमा करेंगे तो दिस विल गिव अस, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। अब 9th ईयर ऐसा आएगा जहां पे जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जो है change in investment would be equal to change in investment would be equal to depreciation और उसके बाद change in capital में कमी वाक़या शुरू हो जाती है। तो this was the tabular form, टेबल के जरिए हमने एक्सप्लेन किया। अब हम इसी चीज़ को we'll try to explain in a simpler way as we know that हमें S गिवन है विच इज 0.3, डेल्टा जो है विच इज डेप्रिसिएशन 0.1, y इज इक्वल टू k 1/2 एंड वी यूज द इक्वेशन विच इज द मोशन इक्वेशन ऑफ सोलो मॉडल। वो कौन सी इक्वेशन है, डेल्टा k इज इक्वल टू एस एफ के माइनस डेल्टा k टू सॉल्व फॉर स्टेडी स्टेट वैल्यूज ऑफ k, y एंड c। सॉल्यूशन हाउ वी कैन सॉल्व इट फॉर द स्टेडी स्टेट, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एंड हमें कहा गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट वैल्यूज ऑफ y, k एंड c। तो हाउ वी कैन डू दैट, as we know that the definition of steady state is where change in capital is equal to 0. जब change in capital is equal to 0 we can say that investment is equal to depreciation है। That is the equation of motion with delta k is equal to 0. Now just substitute the values here as we know that 0.3 is the value of saving, 0.3 into k star under root is equal to depreciation is given to us, वो क्या है 0.1 है, 0.3 under root is equal to 0.1 k. Just simplify this equation, rearrange this equation, we can get k star over k star under root is equal to 3 and this is equal to, further इस simplify करेंगे तो that would be equal to k star under root। वो कैसे आएगा, as we know that k की पावर 1 है ऊपर वाले की, नीचे की 1/2 है, तो अगर k star 1 minus 1/2 करेंगे तो this will give us k star under root। Now k star under root is equal to 3 and in other words because we are interested to find k star which is the steady state of capital, तो k star would be equal to 9। अगर आप if you take the power of that equation which was k under root is equal to 9, k under root is equal to 3, अगर इस equation की दोनों साइड पे आप square root लेते हैं तो you will get k is equal to 9 and y star। अब as we know that कि y star, y हमारे पास क्या है, y is equal to k 1/2 or k under root, so just substitute the value of k there, so we'll get y star is equal to 3, consumption 1 minus s is 3, 1 minus s क्या है 0.7 is s is the 0.3, so 1.7 into 3 is equal to 2.1 is the consumption। So we can say that k star जब 9 होगा 9th ईयर में, 9th इज द ईयर, जो प्रीवियस एग्जांपल है उसको हमने दूसरे तरीके से हल किया, उसमें भी हमने देखा कि इन 9th ईयर चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज 0 एंड द 9 is the value of k where the capital
is at steady state. यहाँ पे भी हम देखा what is the income level is equal to 3, consumption is equal to 2.1. So this is how we can explain the steady state of capital by using the numerical example. Now we'll see that what will happen to the steady state level of capital in the economy if there is a change in capital. अगर capital में तब्दीली आती है तो उससे क्या हो, so if there is change in saving. An increase in saving rate raises investment. Naturally, जैसा कि हमें अंदाज़ा है कि जब सेविंग बढ़ती है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, काजिंग कैपिटल टू ग्रो. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में भी इजाफा होगा और इकोनॉमी एक नई स्टेडी स्टेट पे चली जाएगी. राइट, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम जो कि आपको सामने नजर आ रहा है. इफ यू लुक इन दिस डायग्राम, ऑन वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन एज यूजुअल. ऑन एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग कैपिटल. वी हैव इनिशियल लेवल ऑफ सेविंग व्हिच इज द कर्व व्हिच इज SFK, which is the investment curve, and second is depreciation. Steady state of capital is at K1 star. जैसे कि हमने कहा कि if we assume that कि अगर इकोनॉमी में सेविंग रेट में इजाफा होता है तो क्या है, व्हाट विल हैपन, कर्व जो है ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा. जब कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा तो नो दिस न्यू कर्व जो कि रेड लाइन के साथ आपको नजर आ रहा है S2FK, this curve is intersecting the depreciation curve at a new point and which is greater than the first steady state capital per worker. Now the economy is at equilibrium and where the steady state level of capital is K2, which is bigger than K1 star. Now we can say that if there is an increase in saving in the economy, this will increase investment and then which in turn increase the capital, or capital will grow in the economy and economy will move toward a new steady state level of capital which is higher, which will be higher than the existing steady state level of capital. Now what is the prediction, what we can forecast from this analysis, what we can deduct from this analysis? Higher saving, higher capital, and since y is a function of capital per worker, तो जब सेविंग ज़्यादा होगी तो कैपिटल ज़्यादा होगा. सो वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन फोरकास्ट दैट सिंस वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल वर्कर, दैट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि जिससे हमने स्टार्ट किया था. हमने ये कहा था कि इनकम पर वर्कर इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर. तो जब इनकम कैपिटल पर वर्कर पे डिपेंड कर रही है और जब कैपिटल में इजाफा होगा सेविंग के बढ़ने से, तो व्हाट विल हैपन, आउटपुट per worker or income will be higher. So we can say that in Solow model, Solow model predicts that countries with higher rate of saving and investment will have a higher rate of capital and income per worker in the long run. So this is what we can conclude in the first phase and see the effect of saving on income in Solow model. तो Solow ने ये कहा कि Solow model predicts, ये कहता है that countries with higher saving rate and investment will have a higher rate of capital, will have a higher capital per worker, which in turn increase the output per worker in the economy in the long run time period. Just to give you an idea, international evidence on investment rates and income per worker. On y-axis we are measuring income per person, on x-axis we are measuring investment percentage of output. So you can see that in different countries different rate of investment has different income per persons. We have different categories, different groups of the countries. You can say that in the countries which has higher investment percentage of output, their income per person is higher in those countries. तो जिन ममालिक में आप कहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, आउटपुट में कम कंज्यूम की जा रही है, ज़्यादा सेविंग की जा रही है, वहाँ आप देखें वहाँ पे इनकम पर वर्कर भी ज़्यादा है. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट जापान, फिनलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, इसराइल,
Canada, Denmark, US, these are the economies which are on the top, where the percentage of investment of output is higher. So जहाँ पे परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होगी तो नेचुरली इनकम पर वर्कर भी ज़्यादा होगी। जब इनकम पर वर्कर ज़्यादा होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इनकम पर वर्कर ज़्यादा होने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो जाएगा। सो द इकॉनमी में हालात बेहतर होंगे। इस तरह अगर आप नीचे चले आते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है एज ए परसेंटेज आउटपुट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़, तो वहाँ पे इनकम पर वर्कर भी कम होती जाती है। तो अगर सबसे लास्ट ग्रुप में आ जाएं, युगांडा की बात कर लें, चाइड की बात कर लें, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ आउटपुट इज़ क्वाइट लो, विच शोज दैट इनकम पर वर्कर इन दीज कंट्रीज इज़ आल्सो क्वाइट लो। सो जब इनकम पर वर्कर कम होगी इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो वहाँ पे बेहतर नहीं होगा एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू एन आइडिया हाउ वी कैन रिलेट इन्वेस्टमेंट as a percentage of output with the income per worker. Now we'll come to the second part of today's lecture, which is the golden rule. Now what is the golden rule? We just introduce, first give you brief introduction. Different values of S, अगर हम different values of S लें, lead to different steady states. जैसे कि अभी पिछली स्लाइड्स में हमने देखा, सेविंग में इजाफा हुआ, सेविंग के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है और इकोनॉमी में एक नए और कैपिटल जो एक नई स्टेडी स्टेट पे मूव कर जाता है। तो जब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस होंगी, व्हेन वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस will lead to different steady states. How do we know which steady state is the best? जब आप ये कहते हैं कि बहुत सारे सेविंग रेट, डिफरेंट सेविंग रेट लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर आएगा, राइट? तो कौन सी स्टेडी स्टेट जो होगी वो बेस्ट होगी? फॉर दैट पर्पज वी नीड टू लुक एट फॉर द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल पर वर्कर which will tell us that this is the steady state which is better, and here the capital per worker is maximum, output investment is maximum and output per worker is maximum, और यहाँ पे जो है standard of living लोगों का बेहतर हो सकता है। As we know that economic well-being depends on the consumption, so the best steady state has the highest possible value of consumption per person. तो हम ये ऐसा कि हमें अंदाज़ा है कि हम ये कहते हैं कि जो लोगों की जो वेल बीइंग है वो किस तरह से बेहतर होगी, जहाँ पे उनकी कंजम्पशन पर वर्कर ज़्यादा होगी। अब कंजम्पशन पर वर्कर ज़्यादा कैसे होगी? Because we know that consumption depends on the proportion of saving, right? The income of the proportion of income which is saved, right? तो सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन, सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कम होगी, अगर सेविंग कम होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी। और जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगी, the saving rate at which the consumption is maximum, the consumption is at high, so that steady state will be the best steady state. Now an increase in S leads to higher K and Y, which may raise consumption. Reduced consumption share of income, which may lower C, right? तो there is a possibility कि इनिशियली जब सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और विच मे रेज कंजम्पशन, पॉसिबिलिटी है कि कंजम्पशन बढ़ जाए। लेकिन होगा क्या? विच अल्टीमेटली दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन शेयर ऑफ इनकम। जब सेविंग रेट बढ़ेगा नेचुरली तो कंजम्पशन का जो शेयर है इनकम में वो कम हो जाएगा, और विच कैन लोअर C स्टार, विच मे लोअर C स्टार। तो देयर इज पॉसिबिलिटी विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन either C can be increased or C may be reduced also. So how do we find, किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि S और K that maximize C, कि कौन सा कॉम्बिनेशन है S और K का जो कि C को बढ़ा सकता है? तो
बेसिकली गोल्डन रूल, वाई वी नीड गोल्डन रूल, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं एस की तो डिफरेंट स्टेडी स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी. जब डिफरेंट स्टेडी स्टेट्स आती हैं तो वी कांट से दैट विच वन इज द बेस्ट. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू लुक एट द golden rule. How we can say that, as we know that economic well-being depends on the consumption level of the economy. consumption लोग अगर ज़्यादा करें चीज़ों पे, सर्विसेज पे, तो हम ये कहते हैं कि लोगों की वेलबींग, economic well-being is better off. तो consumption is a function of saving. So suppose if there is increase in S, क्या होगा? सेविंग के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और दिस मे रेज consumption or C star. But at the same time, increase in saving will reduce the proportion of consumption in income. Proportion of जो consumption है income का कम हो जाएगा saving, तो which may lower consumption. So how do we find which value of S and K that maximize consumption? So this is the objective, this is the purpose. We need to find out the golden rule for capital per worker which maximize consumption, so that economic well-being of the society, economic well-being of the individual can be maximized. The golden rule of capital star K star gold is equal to the golden rule of capital, the steady state value of K that maximize consumption. तो ये एक ऐसा, वो जो कैपिटल हम मालूम करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल आएगा जो कि कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करेगा, उसको हम कहते हैं K star gold, the golden rule of capital per worker, the steady state value of K that maximize consumption. Now how we find that, कैसे हमारे पास आएगा, कैसे हम मालूम करेंगे कि which level of K maximizes consumption level in the economy? To find it, first express C in terms of K star, as we know that C star is equal to Y star minus I star, in income minus investment. Now income हमारे पास क्या है? F K star minus investment I star. We can further write this, as we know that investment is equal to depreciation. So consumption C star can be written as Fk minus delta K. In general, as we can rearrange this equation, I is equal to delta K, as we know that delta K is I is equal to delta K plus depreciation. In the steady state, as we know that investment is equal to depreciation, so delta K is equal to 0. So this is as general we know from the Solow model. हमें अंदाज़ा है कि हमारी जो सोलो की इक्वेशन क्या थी? डेल्टा K is equal to I minus depreciation, investment minus, which is the starting or the motion equation of Solow model. उससे आप अगर rearrange करें तो investment किस चीज़ के बराबर आएगी? delta K plus depreciation. And as we know that investment is equal to depreciation, we can say that delta K is equal to 0. Now we'll find the K, golden K, which maximize the consumption level of the society, of the individuals. We can explain this golden rule of capital stock with the help of an example. On y-axis we are measuring steady state output and depreciation. On x-axis we are measuring steady state capital per worker, that is, which is K star. We have a depreciation curve, we have a output curve, Fk, production function. Economy, the steady state of capital is where Fk intersect depreciation. Now then the graph Fk and delta K, and look for the point where the gap between these two is maximum. जहाँ पे इनकम और डेप्रिसिएशन में गैप मैक्सिमम होगा, वो ऐसा पॉइंट होगा, वो उस लेवल पे जो कैपिटल होगा, दैट इज द लेवल ऑफ के विच इज नोन एज के गोल्ड. और जहाँ पे आप कह सकते हैं कंजम्पशन इज एट मैक्सिमम लेवल. नाउ इफ अगर आपको ग्राफ नजर आ रहा है सामने, जैसे कि अगर आप देखें के स्टार गोल्ड जब हम लेते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो y और इसका डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है. इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द कंजम्पशन. सो यू कैन सी दैट द डिफरेंस
at this point between investment and consumption is bigger, so we can say that at this point consumption level is maximum in the economy. So Y star gold is equal to FK gold. At this point Y star gold is a function of FK gold. Gold is for golden rule. So K gold is the capital per worker at the point is capital per worker, which maximizes income in the economy, in the society, which in turn maximizes consumption level, and which in turn promote and increase the economic well-being of the society, economic well-being of the people of the country. Now, as we know that consumption is a function of Fk minus delta K is the biggest, where the slope equals the slope of depreciation line. तो जहाँ पे depreciation line का slope production function के slope के बराबर होगा, वहाँ पे जो है consumption जो है maximum होगी, because at that point जहाँ पे दोनों curves का जो slope है, that is the change. Slope क्या है? Change in that variable respective to other variable. तो where the slope of these two curves, one curve is production function which is Fk, the other is depreciation curve, जहाँ पे दोनों का slope equal होगा at that point, and the difference between these two will be maximum, और जहाँ पे difference maximum होगा वहाँ पे consumption जो है economy की वो maximum होगी. अब slope कैसे देंगे? If you draw a tangent line to the production function, so that will give us the slope of प्रोडक्शन फंक्शन, और जो डेप्रिसिएशन लाइन है वो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो वो उसको जहाँ पे टच करेगी दैट विल बी दी स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन कर्व. तो यहाँ पे अगर आप देखें जो डिफरेंस है बिटवीन income and depreciation is maximum, or that portion is known as the C gold. Why we call C gold? It is the consumption which is maximum at the golden rule capital stock, golden rule of capital stock per worker, steady state capital per worker, where K star is maximum, and K star जब ज़्यादा होगा तो income ज़्यादा होगी, income ज़्यादा होगी तो consumption ज़्यादा होगी. So the slope of production function is the MPK, change in capital per worker due to change in investment. तो जब investment में इजाफा होता है तो capital per worker में इजाफा होता है. So the slope of production function, which is MPK, is equal to the slope of this depreciation curve, which is delta. So at the golden rule of capital, MPK is equal to delta, which is depreciation, और इस पॉइंट पे जो डिफरेंस है दोनों का, इनकम का और डेप्रिसिएशन का, वो वाइडर है, ज़्यादा है. जहाँ पे जो डिफरेंस ज़्यादा होगा स्लोप बराबर हैं, और वहाँ पे कंजम्पशन जो है इकोनॉमी की ज़्यादा होगी. तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ दी level of capital which is known as the golden rule capital stock in the economy, जहाँ पे difference between income और depreciation ज़्यादा है और consumption level ज़्यादा है. So we want to maximize CFK minus delta K. So from calculus at the maximum we know the derivative equal to 0. यहाँ जब आप एक maximum level पे पहुँच जाते हैं तो अगर mathematics का rule है, when you reach at maximum level, calculus says that the derivative will be equal to 0. Delta C over delta K star is equal to MP. अगर आप इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव क्या है? चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल. नो, ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कंजम्पशन, ऑन द अदर साइड वी हैव कैपिटल production function minus depreciation. So change in capital consumption due to change in capital is equal to the slope of production function curve minus the slope of this depreciation curve, because change in DC is the change in consumption due to change in capital is equal to change in output due to change in capital, which is MPK. The slope of production function is MPK, and the slope of depreciation is delta. So DC over DK is equal to MPK minus delta. The slope of consumption function, change in consumption due to change in capital per worker, is equal to the difference in slope of production function minus the slope of
depreciation. Now since as we know that MPK is equal to delta, MPK minus delta is equal to 0, or MPK is equal to delta, so we can say that the economy does not have a tendency to move towards golden rule state. Achieving the golden rule requires the policymaker adjust saving. When MP is equal to delta K, at this point the difference between income and depreciation will be maximum, or K जो है will be the K golden rule of capital, and this at this K the difference between income and in depreciation is maximum, और consumption यहाँ पे ज़्यादा है. Now the transition to the golden rule steady state, how we move, how we transit from the steady state to the golden rule steady state. The economy does not have a tendency to move toward the golden rule steady state. Achieving the golden rule steady state, it requires that the policymakers must adjust savings in the economy. This adjustment leads to new steady state with a higher consumption. But what happened to consumption during the transition to the golden rule, that we doesn't know. जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमी को एक नई स्टेडी स्टेट, जो गोल्डन रूल जो स्टेडी स्टेट है उस पे आने के लिए क्या है कि पॉलिसी मेकर को सेविंग को एडजस्ट करना पड़ता है. जब पॉलिसी मेकर सेविंग एडजस्ट करते हैं, दैट एडजस्टमेंट लीड टू न्यू स्टेडी स्टेट विद हायर कैपिटल पर वर्कर विद हायर कंजम्पशन. बट what happens to consumption during the transition period? मतलब एक consumption में इजाफा तो हुआ जब एक नई steady state पे आप पहुंचे with the higher saving rate, higher investment, higher income, higher consumption, and then what will happen between the transition पे जब एक steady state से आप एक golden rule steady state पे जा रहे हैं, वो transition हो रही है economy में, तो उस सूरत हाल में क्या होगा economy में, how we what happens during that time period? We'll see that now. Starting with too much capital. Now suppose अगर हम ये कहें कि if capital is greater than capital gold, what will happen? K star is greater than K star gold. तो क्या होगा? If you look at the diagram given in front of you, on y-axis we are measuring income, consumption, investment. On x-axis we are taking time. तो हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि अगर कैपिटल जो है ज़्यादा है than the capital goal, तो what will happen to income, what will happen to consumption, what will happen to investment over the time period. तो long term में, long run में investment पे क्या फ़र्क पड़ेगा, consumption पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और output पे क्या फ़र्क पड़ेगा. So if we suppose that if we start with higher capital, too much capital in the economy, that capital is greater than K star gold. अगर हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में कैपिटल बहुत ज़्यादा है और वो जो कैपिटल है दैट इज़ मच बिगर देन के गोल्ड, जो गोल्डन रूल का कैपिटल स्टॉक है उससे ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, दैट विल इंक्रीज सेविंग, that will lead to increase in consumption. Consumption बढ़ जाएगी. तो if you look at the consumption curve at time period T, consumption will go up immediately, and in the transition requires fall in saving. जब सेविंग में कमी वाकई तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट में कमी वाकई, तो यू कैन सी इन रेड लाइन जैसे इमीडिएटली जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें कमी वाकई हो जाएगी. आउटपुट जो है in transition to the golden rule, consumption is higher at all points. तो हर पॉइंट पे कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगी. मतलब अगर आप देखें हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, कंजम्पशन लाइन है और आउटपुट लाइन है. तो तीन लाइंस हमारे पास हैं. शुरू में हम उसको कंप्लीट लाइन है, उसके बाद डॉटेड लाइन है. T इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे हमने ये कहा कि अगर इस टाइम पीरियड में कंजम्पशन, इनिशियल कंजम्पशन जो इकोनॉमी में ज़्यादा है देन द कैपिटल गोल, तो व्हाट विल हैपन, कंजम्पशन में इजाफा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी, आउटपुट वहीं पे सेम रहेगी. एंड इफ़ दिस कंटिन्यूज, तो ओवर द टाइम पीरियड क्या होगा, कंजम्पशन विल रिमेन हायर देन ऑल पॉइंट्स, रिमेन इज हायर एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, investment is lower, output is lower. So what we can see that, what we can deduce or deduct from this diagram, what we can conclude from this diagram, हमने ये कहा कि if capital
per worker is higher than capital goal K goal, तो what will happen? Consumption will be higher. तो जैसा कि आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, कंजम्पशन ऊपर चली जाती है, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट आपको देखें कि नीचे नजर आ रही है, right? So after this, if we have the same situation in the economy, if this situation continues, consumption is always higher at all points in time, and investment is lower at all points in time, and income in the economy is also lower at all points in time. So this is the state of affair if we start with too much capital. Now we'll see what will happen if we start less capital than the capital goal. So if K is less than K goal, so what will happen? Consumption में कमी वाक़ई हो जाएगी और सेविंग ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा. तो दिस इज़ एन अपोजिट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कि हमने प्रीवियस देखा कि फॉर फ्यूचर जनरेशन enjoy higher consumption but the current one experience an initial drop in consumption. बेसिकली यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि जब हमने पिछला डायग्राम देखा कि हमारा कैपिटल ज़्यादा है कैपिटल गोल से, तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे यहाँ पे और प्रेजेंट जो है कम करेंगे. यहाँ पे क्या है, फ्यूचर जनरेशन एंजॉय हायर कंजम्पशन at all points in time because consumption is higher but the current experience is an initial drop in consumption. तो initially जो है वहाँ पे क्या था कि initially जो current जो है उनकी ज़्यादा हुई consumption, लेकिन later on consumption में कमी वाक़ई होगी. यहाँ पे क्या है कि future generation will enjoy higher consumption when we have less K than K goal. The future generation will enjoy higher consumption but the current one experience initial drop in consumption. Or investment, why future generation enjoy higher consumption? Because अगर आप देखें कि investment जो है वो ज़्यादा है over the time period, and जब investment ज़्यादा होती है तो income ज़्यादा होती है, income ज़्यादा है तो share of consumption income will go up. So in this diagram, when K is less than K gold, तो what will happen? Initially consumption कम होगी but future generation जो है consumption को enjoy करेंगी, उनकी consumption ज़्यादा होगी because of higher investment and higher income in the coming time period. Now we'll see, this was all about how saving can play an important role in the Solow model. तो हमने देखा कि अगर saving में growth होती है तो इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर हो जाएगा. नाउ द सेकंड फैक्टर, सेकंड वेरिएबल जो कि सोलो मॉडल में इफेक्ट कर सकता है इनकम पर वर्कर को इज द पॉपुलेशन ग्रोथ. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तीन फैक्टर्स हैं, तीन अवामिल हैं कि जो कि सोलो ने एनालाइज किया कि दैट कैन इफेक्ट द इनकम पर वर्कर. वन, सेविंग, population and technology. Now we'll see the second. Assume that population and labor force grow at the same rate. N is the exogenous. So delta L over L, delta L, that is change in labor due to more growth in population, is equal to N. So growth of population is equal to N. Now suppose L is equal to 1000 in year 1 and the population is growing at 2% per year. So N is equal to 0.02. So then the change in L will be N into L equal to 0.02 into 1020. So labor will be added. If the growth rate of population is 2%, so the total addition in labor force will be 20, and the population of year 2 next year will be 1020. So if in year 1 total labor force, total population is 1000 and growth rate of population is 2%, so 2% of 1000 is 20. So every year 20 people will be added in the population, in the labor force. So for next year you can come up with a new labor force. 10-20 का 2% लेंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो next year की आपके पास population और the labor force आ जाएगी. Here we comes the concept of break-even investment. And what is the break-even investment? The amount of investment necessary to keep K constant. एक ऐसा level of investment हमें चाहिए जो कि capital को constant रख सके, so that economy can enjoy the benefits of
higher saving, higher investment. So break-even investment is if you just add up the N with the depreciation. So depreciation plus NK is the break-even investment. So break-even investment includes one, that delta K to replace capital as it warehouse. तो ब्रेक इन इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें शामिल हैं, एक वो जब कैपिटल वेयर आउट हो जाता है, डेप्रिशिएट होता है, तो वो उसमें शामिल होता है कंपोनेंट, एंड NK टू इक्विप न्यू वर्कर्स विद कैपिटल, जो नए लोग आते हैं, मजदूर नए लोग लेबर में ऐड होते हैं, तो उनको इक्विप करना विद द कैपिटल. अदरवाइज K वुड फॉल एज द existing stock of capital would be spread over thinly over a larger population of workers. So break-even investment has two components. One is delta K, which is the capital as it wear out. Second, and NK to equip new workers with capital. Now the equation, अब जब हमने population growth को ऐड किया ग्रोथ मॉडल में, सोलो ग्रोथ मॉडल में, तो हमारी जो मोशन इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है सोलो मॉडल की, वो क्या बनेगी? डेल्टा के इज इक्वल टू एस एफ के माइनस डेल्टा डेप्रिसिएशन प्लस एन के. सो फर्स्ट पार्ट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट and then the break-even investment. So change in capital is equal to now the actual investment minus the break-even investment. Now we can transform this thing into diagram. On y-axis we are measuring break-even investment, on x-axis we are measuring capital per worker. SFK is the investment curve and delta plus NK is the break-even curve. Now capital economy is at steady state, the capital is steady state at the point where the investment, actual investment is equal to the break-even investment, and where these two curves are intersecting each other, that is the steady state equilibrium, and in this case it is after when we include population growth rate in the Solow model. Now suppose if there is increase in the population and increase in N cause an increase in the break-even investment. जब N बढ़ेगा, क्योंकि N is added in depreciation, so which is the break-even investment, तो N के इजाफे के साथ when there is growth in population, so that will increase the break-even investment and the curve will shift upward, and the economy moves towards a new steady state capital per worker, which is with the green line. अगर आप देखें, this is new break-even investment line जो कि intersect कर रही है investment को, actual investment को at another point, and we have a K2 star, a new capital state, steady state per worker, and which is less than the original worker. So with the increase in N, जब N बढ़ेगा, population growth बढ़ेगी, तो क्या रिजल्ट निकला कि कैपिटल पर वर्कर जो है वो कम हो जाएगा, कैपिटल श्रिंक कर जाएगा, और इकोनॉमी जो है लीडिंग टू ए लोअर स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, एक कम कैपिटल पे हम मूव कर जाएंगे. तो व्हाट इज द प्रेडिक्शन? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, हायर एंड लोअर के, एंड सिंस के y is a function of capital in the production function, so जब lower k होगा तो क्या होगा, y भी lower हो जाएगा. So we can say that in Solow model predicts that, this is second finding. पहली finding क्या थी कि हमने ये कहा था कि जब saving rate ज़्यादा होगा, k ज़्यादा होगा, k ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन पर वर्कर ज़्यादा हो जाएगी. Now second क्या है, the Solow model predicts that in countries with higher population growth rate will have lower level of capital and income per worker in the long run, then there will be lower level of consumption in the long run in the economy. International evidence, on y-axis we are taking income per worker, and here we are taking population growth. So you can see that the countries with the higher population growth rate, उनकी income per worker ज़्यादा है, वो ममालिक जहाँ पे population growth rate कम है उनकी इनकम पर वर्कर ज़्यादा है. तो हम ये कह सकते हैं, सोलो ने ये कहा कि ऐसे ममालिक जहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ इनकम पर वर्कर कम होगी. इनकम पर वर्कर कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है लोगों की, वो कम होगी. अब उसी तरह जिस तरह हमने सेविंग के लिए गोल्डन रूल, गोल्डन स्टेट ऑफ कैपिटल डिफाइन किया, अगर हम जब पॉपुलेशन को शामिल करते हैं सोलो मॉडल में, तो द गोल्डन रूल विद पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, तो टू फाइंड द गोल्डन रूल कैपिटल स्टॉक विद वी कैन
express C in terms of K, y is equal to C is equal to y star minus I star. Here y, as we know that fk minus, अब I पहले जो था I was delta K only, I depreciation was equal to investment. Now I is equal to the break-even investment, which is delta plus n into K. So here C is maximized at the point where the slope of production function, the actual investment, is equal, MPK is equal to the slope of the break-even investment, which is delta plus n. So in other words, we can say that MPK minus delta is equal to n. So in the golden rule steady state, the marginal product of capital net of depreciation equals the population growth rate. So in case of, if we add population in the Solow model, तो जो golden rule steady state है वहाँ पे the marginal productivity of capital net of depreciation is equal to the population growth rate. So this was all about today's students. So what we have learned in today's class, आज हमने बेसिकली हमने सोलो मॉडल को आगे चलाया और हमने दो पैरामीटर्स का इफेक्ट देखा. हम पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक इक्वेशन सोलो मॉडल की डिटरमिन की थी और दैट वाज चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. तो उसी इक्वेशन को लेके आगे हम चले. दो वेरिएबल्स का हमने इफेक्ट देखा, दो अवामिल का इफेक्ट देखा कि कैपिटल स्टॉक पर वर्कर पे क्या होगा, विच इन टर्न इफेक्ट द इनकम पर वर्कर, सेविंग का और पॉपुलेशन ग्रोथ का. हमने ये कहा कि अगर सेविंग में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, कैपिटल पर वर्कर बढ़ता है और आउटपुट और इनकम पर वर्कर में इजाफा होता है. दूसरा जो वेरिएबल हमने देखा दैट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा होता है तो कैपिटल पर वर्कर में कमी वाक़या होती है, कैपिटल पर वर्कर में कमी वाक़या होती है तो आउटपुट और इनकम पर वर्कर में कमी वाक़या. सो वी हैव डिस्कस टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अवामिल की बात की जो कि सोलो मॉडल में हाउ दे कैन इफेक्ट द इनकम पर वर्कर. सो वी हैव डिस्कस्ड हायर आउटपुट एन इंक्रीज इन सेविंग लीड्स टू हायर आउटपुट इन द लॉन्ग रन, faster growth temporarily but not faster steady state growth. And secondly, how the population can affect that higher output, lower output in the long run, lower growth rate temporarily but not faster but not lower steady state growth in the long run. So दो parameters का effect देखा, income per work per one, the saving rate, the other is पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज टेक्नोलॉजी, उसकी बात करेंगे. अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, हाउ दैट इफेक्ट द इनकम पर वर्कर इन केस ऑफ सोलो मॉडल इन डिफरेंट इकोनॉमीज. तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. टिल द नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.